students of class 5th. Welcome to English class. I'm your teacher Divya. Children, have you ever been to city? क्या आप कभी शहरों में गए हैं या शहर में गए हैं? शहर कैसा होता है? Well, it's a very busy place, है ना? ये एक बहुत ही बिजी जगह है. कैसे? कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है. People are moving here and there. The vehicles are moving. गाड़ियां चल रही हैं. लोग अपने में जा रहे हैं. कोई कहीं दौड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है. Right? Yes. So city is like that. So today we are going to see a lovely poem. And the poem का नाम है Sing a Song of People. यानी कि लोगों के बारे में गाना गाइए. ठीक है, तो कैसे लोगों के बारे में गाना गाना है? Let's find out. Okay, let me tell you children that हमारे साथ we have हिंदी मीडियम students also. Okay, तो मैं आपको इंग्लिश में जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो उसके साथ साथ आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन हिंदी एज वेल. ओके, सो लेट्स सी द वंडरफुल पोएम सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल. देयर चिल्ड्रन, सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल. सिंग मीन्स गाना गाना, राइट? सॉन्ग गाना, गीत. ओके, तो किसके बारे में गाना है? अब of people, लोगों के बारे में गाना है. Let's see what it is talking about. Everybody seems to be in such a hurry these days. क्या मतलब है? आजकल के दिनों में हम देख रहे हैं कि हर कोई बहुत बिजी है, व्यस्त है. कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. सबके पास, किसी के पास समय नहीं. वेरी वेरी बिजी, engrossed in everything, you know. हर किसी में हर कोई ना कोई बिजी है, एकदम धुन में है, लगा हुआ है. I wonder why. मैं सोचता हूँ क्यों सब कोई इतने बिजी है. Okay, let's read out. Let's recite this. Sing a song of people walking fast or slow. People in the city, up and down they go. Once again. Sing a song of people walking fast or slow. People in the city, up and down they go. किसके बारे में गाने के लिए बोल रहा है? Sing a song of people है, लोगों के बारे में गाना गाना है. गाइए walking fast or slow, जो या तो धीरे चल रहे हैं या फास्ट चल रहे हैं. People in the city, शहर में लोग up and down they go, आते हैं जाते हैं. ठीक है, let's next full line. People on the sidewalk, people on the bus. People on the sidewalk, आपने देखा किनारे किनारे भी, रोड के किनारे पे चलते होंगे. तो लोग कहाँ पर है? साइडवॉक में है. People on the bus, some people are on the bus, कुछ लोग बस में है. People passing, कुछ लोग गुजर रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, वहां से गुजर रहे हैं. People passing in back and front of us. हमारे बैक और हमारे फ्रंट से पास कर रहे हैं, यहां से बैक से पास कर रहे हैं, गुजर रहे हैं. ओके, लेट्स रीड आउट दिस फुल लाइन अगेन. पीपल ऑन द साइडवॉक, पीपल ऑन द बस, पीपल पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस. हमारे आगे और पीछे जो लोग आर पार हो रहे हैं, उन लोगों के बारे में बात किया जा रहा है. शैल वी रिसाइट दिस 8 लाइन्स? ओके. Sing a song of people walking fast or slow. People in the city, up and down they go. People on the sidewalk, people on the bus, people passing in back and front of us. Okay, let's move on. There, people on the subway. There children, subway. What is subway? Subway मैं आपको बता दूं, रोड होती है. रोड बहुत बिजी होती है रोड. ठीक है, अगर आपको उस तरफ पार करना है, गाड़ियां इतनी ज्यादा होती हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस. तो व्हाट हैपेंस, ये रोड है तो रोड के इस तरफ में यहां से नीचे की तरफ रास्ता होगा. ओके, एंड दिस path will lead to that side.
यहां से आप नीचे उतरोगे, सीढ़ी से नीचे उतरोगे, रोड के नीचे से जाओगे और आप इस तरफ पार ऊपर हो जाओगे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड सबवे, यानी कि अंडरनीथ। ओके ओके, सो पीपल ऑन द सबवे, सबवे में भी लोग हैं। अंडरनीथ द ग्राउंड, अभी मैंने बताया जमीन के, रोड यहाँ पर है, इधर से सीढ़ियां हैं, टप 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 नीचे, लोग यहाँ चलते हुए जाएंगे, यहाँ सीढ़ी चढ़ते हुए रोड की इस पार आ जाएंगे। ओके, सो इट इज अंडरनीथ द ग्राउंड, जमीन के नीचे है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सबवे, रास्ता, नीचे का रास्ता। ओके, पीपल ऑन द सबवे अंडरनीथ द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, जमीन के नीचे। पीपल राइडिंग टैक्सीज, लोग टैक्सीज चला रहे हैं, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, शहरों में घूम रहे हैं। टैक्सीज क्या है, जो भाड़े का, किराए का गाड़ी होती है ना, हाँ, दे आर कॉल्ड टैक्सीज। तो वो जो टैक्सियां भी जो शहर में गोल गोल, कभी यहाँ जा रही है, कभी वहां जा रही है, दे आर गोइंग राउंड एंड राउंड। ओके, shall we read out this again? चलिए रिसाइट करते हैं। People on the subway underneath the ground, people riding taxis round and round and round. Okay, people with their hats on. That means hats, children. Do you know what is a hat? You know, hat is like this. And it will be like this. This is hat. Okay, this is hat. And cap, this is cap, children. Okay, this is cap and this is hat. Okay, hat, you can hold on, it will be having the signs. Okay, so this is hat and this is cap. Now listen, people with their hats on, that means people are wearing the hats. Okay, people with their hats on going in the doors, going in the door, दरवाजे के अंदर जा रहे हैं, टोपी पहने हुए। People with umbrellas, छाते लेकर, छतरियां लेकर, when it rains and pours, और लोग क्या लेकर जा रहे हैं? Umbrellas कब? When it rains and pours, जब वो बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तब लोग क्या ले रहे हैं? उनके पास umbrellas हैं। Okay, let's recite this. People with their hats on going in the doors, people with umbrellas when it rains and pours. Okay, children, shall we read out this again? Okay, sing the song of people. Sing a song of people walking fast or slow. People in the city, up and down they go. People on the sidewalk, people on the bus, people passing in back and front of us. People on the subway, underneath the ground, people riding taxis round and round and round. People with their hats on going in the doors. People with umbrellas when it rains and pours. Okay, let's move on to the next one. There. It's a long poem, children, but lovely poem. People in tall buildings. Well, आपको पता है cities में बड़ी बड़ी लंबी लंबी buildings होते हैं. Okay, there you can see the tall buildings. Okay, children. Okay. Okay. Now, people in tall buildings and in stores below, और जो stores होते हैं जहाँ सामान वामान रखे जाते हैं, बिक्री की जाती है, बहुत सारे सामान होते हैं, stores कहा जाता है उन्हें. Okay. And in stores below, जब बिल्डिंग लंबी लंबी ऊंची है और लोग जो है नीचे stores में नीचे हैं. Okay. Riding elevators. What is elevators, children? I'm going to show you. आपने फिल्मों में भी देखा होगा, or you might have seen in televisions also. Elevators can जिसे lift भी कहते हैं. Elevators means it will elevate you, ऊपर ले जाता है, लेकर जाता है. And it also comes down. जहाँ पर आपको समझ लीजिए बड़ी बड़ी लंबी बिल्डिंग्स हैं और आपको चलने के लिए बहुत मुश्किल है, आप थक जाओगे चलने के लिए, तो what people use elevators. I'm going to show you. Here's the elevator, children. देखिए बड़े बड़े, देखिए कितने मंजिल, 1 2 3 4 5 6 7 लंबे लंबे बिल्डिंग्स होते हैं. ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, तो वहां सीढ़ियों से जाने के लिए मुश्किल होता है. तो उनके लोगों की आसानी के लिए क्या बनाया है? दिस इज एलिवेटर, चिल्ड्रन. देखिए यहाँ पे लोग खड़े हैं. Here you can see this is the elevator. एक कोई ऊपर जा रहा है, एक नीचे की तरफ आ रहा है. ओके, तो पीपल दे डू, आपको चढ़ कर जाने की जरूरत नहीं है. आप सीधे एलिवेटर्स जहां पर होते हैं वहां पर अंदर घुस जाइए. एक एलिवेटर में कम से कम 7 से 8 लोग जाते हैं.
ओके, इसके अंदर चले जाइए और देन द डोर्स विल बी क्लोज्ड. यू हैव टू पुट ऑन, आपको कौन सी नंबर में जाना है, यू हैव टू जस्ट प्रेस द नंबर्स होंगे वहां में अंदर में. अगर आपको सेकंड स्टोरी में जाना है तो यू हैव टू प्रेस नंबर 2. अगर आपको फोर्थ फ्लोर में जाना है देन यू हैव टू press the button 4. So this is the elevator. Okay, here's the elevator. Here are 2 elevators. एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ उतर रहा है. Okay, similar like this. Okay, so they are called elevators या lift भी कहते हैं. Okay, let's move on to the poem. There. People in tall buildings and in stores below. लोग टॉल बिल्डिंग में भी है और स्टोर्स में भी है. ठीक है, जहाँ पर सारे सामान वगैरह सब बिक्री होते, दुकान जो बड़े बड़े दुकान है वो स्टोर्स है, नीचे हैं, वहां भी बिलो नीचे नीचे स्टोर्स रखे गए हैं. राइडिंग एलिवेटर्स, एलिवेटर्स में सवार होकर जा रहे हैं, लिफ्ट में सवार होकर जा रहे हैं. अप एंड डाउन देखो, अभी मैंने कहा कोई अप जा रहा है, कोई डाउन आ रहा है. ठीक है, लोग सब, ऑल द पीपल. ओके, लेट्स रीड आउट. पीपल इन टॉल बिल्डिंग्स एंड इन स्टोर्स बिलो, riding elevators, up and down they go. Okay. People walking singly. Singly means अकेले. लोग जो है अकेले, बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब अपने में अकेले अकेले चल रहे हैं. People in a crowd. बहुत सारे लोग भीड़ में भी हैं. People saying nothing. कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोल रहे हैं. Saying nothing. कुछ भी नहीं बोल रहे हैं. People talking loud. और कुछ लोग जोर से बातें कर रहे हैं. कुछ लोग चुपचाप है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं. कुछ लोग जो है क्राउड में है, भीड़ में है, क्राउड भीड़. और कुछ लोग जो है अकेले, सिंगली, अकेले ही चल रहे हैं. ओके, लेट्स रिसाइट दिस. पीपल वॉकिंग सिंगली, पीपल इन अ क्राउड, पीपल सेइंग नथिंग, पीपल टॉकिंग लाउड. ओके, लेट्स सी द थर्ड सेंटेंस. पीपल लाफिंग, स्माइलिंग. What are the people doing? They are laughing and they are smiling. Laughing, ha ha ha. Smiling, this is called smiling. When you smile, there is no sound. When you laugh, sound can be heard. Okay? Well, people laughing, smiling, grumpy people too. Grumpy people means people who get angry very fast. जो लोग जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं या थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के जो होते हैं ना, किसी भी चीज के लिए हम करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं. यस, सो दे आर कॉल्ड ग्रम्पी. सो पीपल लाफिंग, स्माइलिंग, कुछ अच्छे हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोग हैं. ग्रम्पी पीपल टू, कुछ लोग ग्रम्पी ऐसे करके जा रहे हैं. ओके, ऐसे लोग भी हैं. देयर आर दिस काइंड ऑफ पीपल आल्सो. पीपल हु जस्ट हरी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम जल्दीबाजी में हैं. एंड नेवर लुक एट यू. कुछ लोग एकदम हरी भरी में हैं और वो आपको देखते ही नहीं. There are such people also. ऐसे लोग भी हैं. Okay. People laughing, smiling. Grumpy people too. People who just hurry and never look at you. Okay. Let's see the next one. This is the last and the children. Sing a song of people who like to come and go. ये हम उन लोगों के बारे में गाना गाए जो आना और जाना पसंद करते हैं. They who like, जिन्हें अच्छा लगता है to come and to go. Okay, sing of city people, और शहर के लोगों के बारे में गाना गाइए. You see but never know. आप उन लोगों के बारे में, उन सिटी के, उन शहर के लोगों के बारे में गाना गाइए जिन्हें आप देखते हैं. You see but never know, लेकिन आप उन्हें कभी नहीं जानते. Let's recite this 4 lines. Okay, sing a song of people who like to come and go. Sing of city people you see but never know. And this beautiful poem has been written by Lois Blensky. Okay? Alright, children. So, जल्दी से हम एक बार full poem को recite कर लेते हैं. Okay, in one stretch. Okay? Well, sing the song of people. Sing the song of people walking fast or slow. People in the city, up and down they go. People on the sidewalk, people on the bus. People passing in back and front of us. People on the subway underneath the ground. People riding taxis round and round and round. People with their hats on going in the doors. People with umbrellas when it rains and pours. People in tall buildings and in stores below. Riding elevators, up and down they go.
People walking singly, people in a crowd, people saying nothing, people talking loud, people laughing, smiling, grumpy people too, people who just hurry and never look at you. Sing the song of people who like to come and go. Sing of city people you see but never. Okay. Let's move on to let's move on to the next portion. There. You saw the picture of elevators. And okay, let's see the new word. Okay, I am नए शब्द देखते हैं. First word is subway. मैंने आपको बताया subway. What is subway? Underground passage. रास्ता यानी कि जमीन के नीचे का रास्ता for people to cross. लोगों को क्रॉस होने के लिए. Like you have seen zebra crossing. देखा है आपने zebra crossing? धारी धारी होती है zebra. It's on the road like this. Zebra crossing होता है, okay? But here, because city is very crowded, बहुत crowded होते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ, vehicles come and go, so they have made a subway. Road is like this, ये बड़ी लंबी सी रोड है, इसके नीचे यहाँ पर आपको अंदर से जाना होता है, स्टेप्स नीचे उतर करके, नीचे चलकर कुछ दूर चल करके, और आप रोड के इस पार आ जाओगे. Okay, that is subway. Okay, underneath यानी कि बिलो, नीचे. एलिवेटर्स, मैंने अभी पिक्चर दिखाया. एलिवेटर्स, लिफ्ट. यस, एलिवेटर में जब आप जाओगे तो आपको चढ़कर जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट पे खड़े हो जाइए एंड दैट एलिवेटर विल टेक यू. आप कहाँ पर, चौथी मंजिल में जाना है, 10वीं मंजिल में जाना है. इफ यू वांट टू गो टू द 10th story also you can go there. The elevator, the lift will take you up. Okay, next, grumpy. जैसे मैंने कहा इल टेम्पर्ड यानी कि जिनका जो है वो थोड़े गुस्से वाले, टेम्पर जो है, उनकी जो मिजाज जो है वो थोड़े खराब होते हैं, अच्छे मिजाज नहीं होते उनके, ठीक है, और कुछ जल्दी से गुस्सा आ जाता है. दे आर इल टेम्पर्ड. ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स सी दिस पोर्शन. रीडिंग इज फन. Children, which modes of transport do the people use to move around in the city? To move around in the city. सिटी के अंदर ही घूमने के लिए लोग कौन कौन से यातायात के साधन यूज करते हैं अंदर में घूमने के लिए, सिटी के अंदर घूमने के लिए? Can we see? Chuck. Okay, let's see. There. First means of transport is bus, and the other means of transport is taxis. Do you find any other? कोई और चीजें हैं जिसके द्वारा लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं? No. There's only elevator. Okay. So let's write down the answer. Okay, children. So which modes of transport do the people use to move around the city? Now we can write down. People use, what do they use? They use buses. Okay. People use buses and taxis and taxis. For what? To move around, M-O-V-E, move around, A-R-O-U-N-D, around in the city, C-I-T-Y, city, full stop. ठीक है, लोग जो है सिटी के अंदर में, शहर के अंदर में घूमने के लिए कौन से यातायात के साधन का इस्तेमाल करते हैं? टैक्सी और buses. Okay, so हमने लिखा है people use buses and taxis to move around in the city. Okay. Question number 2. What are the things that the people carry with them while moving around? जब लोग वहां घूम रहे हैं अंदर सिटी के अंदर में, तो क्या क्या चीजें अपने साथ लेकर चल रहे हैं? फर्स्ट थिंग इज हैट.
You can write down people carry. We will start the answer from people carry. People carry what? Hats and umbrellas. Okay, let's write down umbrellas. umbrellas. Okay, हमने लिख लिया. People carry hats and umbrellas with them. Okay, with them. You can see the question itself. With them, while. The rest of the things you can take down from the question itself. ठीक है, बाकी सारी चीजें क्वेश्चन से आप नोट डाउन कर सकते हो. While moving around. AROUND, around. Okay, I'll read out the answer. People carry hats and umbrellas with them while moving around. Okay. Okay, now on to question number 3. Where all do you find these very busy people? ये जो इतने बिजी लोग हैं, आप उन्हें कहाँ कहाँ पाते हैं, कहाँ कहाँ पर हैं? Okay, write down. We find these very very busy people. Okay, कहाँ कहाँ पर है? busy people. आइए हम ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पर है. We find these very busy people. Let's look into the poem. चलिए कहाँ कहाँ पर है? Okay, we find these people where? In the sidewalk. Okay, sidewalk, on the sidewalk, on the bus, okay, on the subway, underneath the ground, in the taxis. Okay, so shall we write down one by one? We will write down people on the sidewalks, on the bus. Okay, let's write down. Okay, we find these very busy people on the sidewalks, then on the buses. और कहाँ देखा हमने? Let's see once again. Okay. There. Now, here comes the answer. ठीक है, हमने लिख लिया people on the sidewalk, on the bus, and then on the subway, underneath the ground. Okay, let's write down on the subway. Let's write down on the subway. On the subway. बहुत सारी जगह पर हमने देखा है लोगों को. Subway. And then underneath the ground is okay. That means it's the subway only. And in the have you written buses? Yes, we have written. Have you written taxis? We have not written taxis. Okay. On the subway, in the taxis, and oh, there are so many places. In elevators, okay, in stores, in elevators. Okay. Are we omitting anything? Are we missing any other place?
Let's check it out, children. There. Okay, we have written elevator also. And there. Okay. One we missed is stores. We have written store. We have written elevators. We can write down tall buildings. Okay. Shall we? Okay, we'll write down tall buildings. Okay. All the answer you have to find it from the poem itself, children. Okay. So in stores, in elevators, and in the, I'm going to write small, okay, in the buildings, I'm going to write just building, Buildings. ठीक है, मैंने छोटा छोटा लिख दिया है. Okay, I'm going to read out for you. We find these very busy people. हम ऐसे सारे बहुत सारे busy लोगों को पाते हैं. कहाँ पर पाते हैं? On the sidewalks, on the buses, on the subway, in the taxis, comma, in stores, in elevators, and in the buildings. That is tall buildings. If you want, you can add tall buildings. Alright. Okay, number 4. Where have you seen crowds of people? आपने लोगों की भीड़ कहाँ पर देखी है? Any guesses? बताइए, आप तो जानते हैं. Well, we see the crowd in the market area. We see the crowd outside the cinema hall. We see the crowd in the bus stands. We see the crowd in the school. Yes, there is also a big crowd of children, right? Okay, we see the crowd on the road. Okay, and we also see the crowd in stadiums also. Shall we write? Okay, you can write. This answer you can write. You can write down. Where have you seen crowds of people? You write down. I have. बाकी मैं नहीं लिख रही हूँ. The rest of the thing you have to write down. Okay. Now I have written. I have seen crowds of people. Now अभी आपको लिखना है. कहाँ पर लिखा है? I have seen crowds of people in the theatre. मैंने बता दिया theatre. Okay, in the cinema theatre or drama theatre, anything. In the theatre. And the rest of the things you have to write. ठीक है? और अब भीड़ crowd कहाँ देखते हो? You can write down the name of the places. ठीक है? जहाँ जब आपने भीड़ देखा है, write down the name of those places. This is for you. Okay, you have to write down. Okay. Next. Question number 5. Why do you think all these people are in a hurry? आपको क्या लगता है कि ये लोग क्यों इतनी जल्दीबाजी में? Why? Any guesses, children? आपको क्यों ऐसा लगता है कि सिटी में जो सारे लोग, कोई अब नहीं जा रहा, कोई दौड़ रहा, कोई हंस रहा है, लेकिन कोई किसी को, nobody is looking at anyone, कोई किसी को नहीं देख रहा है. Why? Because people are what? People have their own work, and that is why they are busy. Okay, so because they are busy, so they are in a hurry. ठीक है, वो busy है, इसीलिए वो लोग जल्दी में एकदम कि उनको जल्दी जाना है, बहुत काम है उनके पास में. So you can write down. I think all these people are busy in their work. So अपने कामों में बिजी हैं, इसलिए so they are in a hurry. Okay, I'm reading out the question first.
Why do you think? आपको क्यों ऐसा लगता है? All these people are in a hurry. ये सारे लोग बहुत जल्दीबाजी में. आपको ऐसा क्यों लगता है कि सारे लोग इतने जल्दीबाजी में हैं? Answer. I think मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ. All these people are busy in their work. मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग अपने कामों में बहुत बिजी हैं. So they are in a hurry. इसलिए वो अपने काम में लगे हुए हैं ना. इसलिए उनको जल्दी है अपने काम करने. Okay. All right, so children. I want you all to go through this lovely poem. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप इस पोम को 2-3 बार रिसाइट करें, तब जाकर के आपको कविता बोलने में बहुत मजा आएगा. You're going to enjoy this poem. If you're not going to read it out, recite it out, then you will not remember it. You know, जब आप उसको बार बार दोहराओगे नहीं, रिसाइट नहीं करोगे, तो आपको याद नहीं होगा. जब याद नहीं होगा तो आप कैसे मजा लोगे? देखिए, जब when you know the some songs, you sing and you enjoy, right? हाँ, जब आपको कोई गीत याद रहता है तो आप गा के मजे से आनंद लेते हैं उसका. तो similarly, you have to recite again and again so that you will by heart the poem. Okay, it's a beautiful poem about the people of city. Okay, and do go through the new words. जो new words हैं उनके meaning भी देख लीजिए. और हमने क्या देखा था? We came across these question answers. Okay, and yeah, that's all. Only question answer, children. Okay, then today we had the whole poem, new words, and 4 to 5 question answers. Okay, do go through the question answers also and write down in your textbook with pencil. Whenever you're using your textbook, use pencil. Okay, and do go through these answers twice. Okay, in the next part, children, we are going to continue this the same poem. Okay, see you. Bye bye, children.